Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Welcome to Smart Learning Academy. Today we are going to study will. What is will? Will is modal auxiliary verb. ग्रामर के लिहाज से will को हम modal auxiliary verb कहते हैं. Will is followed by the first form of the verb. Will के बाद हमेशा हम verb की पहली form यूज़ करते हैं. Will is used to talk about coming time. Will जो है वो आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर को जाहिर करते हैं. स्ट्रक्चर को देख लें. पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट plus will plus first form of the verb plus rest of the sentence. For example, they will go to Lahore tomorrow. Negative structure subject plus will not या contraction form won't plus first form of the verb plus rest of the sentence. For example, they will not go to Lahore tomorrow. या will not की शॉर्ट फॉर्म क्या है? won't. हम कह सकते हैं they won't go to Lahore tomorrow. Question. Will use at the beginning of the sentence, followed by subject, followed by first form of the verb and rest of the sentence. For example, will they go to Lahore tomorrow? इसकी आंसर किस तरह होगी? Yes, they will. और नेगेटिव आंसर नो दे विल नॉट या नेगेटिव आंसर में शॉर्ट फॉर्म नो दे वोंट. नाउ यूजेज की तरफ आइए. नंबर 1, फ्यूचर एक्शन और एक्टिविटी. विल जो है वो फ्यूचर टाइम को जाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी विल वॉश द डिशेस टुनाइट. वो रात को बर्तन धोएगी. They will go to Lahore next week. वो अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे. I am busy right now. I will call you tomorrow. अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको कल कॉल करूँगा. सेकेंड यूजेज को देख लें. प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्शन मतलब मुमकिनियत या पेशन गोई. फॉर एग्जाम्पल, she will succeed because she works hard. वो कामयाब होगी क्योंकि वो सख्त काम करती है या सख्त पढ़ती है. It will be rainy tomorrow. कल बारिश होगी. या हम कह सकते हैं कि कल बारिश हो सकती है. The president will not be re-elected at the next election. जो प्रेसिडेंट है वो नेक्स्ट इलेक्शन में सिलेक्ट नहीं होगा. थर्ड यूजेज को देख ले. विलिंगनेस. विलिंगनेस मीन मर्जी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. आई विल गिव यू माई कोट इफ यू फील कोल्ड. स्टूडेंट 1, देयर इज द डोर बेल. स्टूडेंट 2, आई विल सी. फोर्थ यूजेज को देख लें. प्रॉमिस. विल जो है वो प्रॉमिस को भी जाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाय यू अ बाइसिकल दिस मंथ. मैं इस महीने आपके लिए साइकिल ख़रीदूँगा. आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ़ यू गेट फर्स्ट पोजीशन. अगर आप फर्स्ट पोजीशन लोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूँगा. आई विल हैव इट रेडी बाय टुमारो. मैं इसको कल तैयार करूँगा. नंबर 5 को देखें. थ्रेट और वार्निंग. किसी को धमकी देना. फॉर एग्जाम्पल, आई विल किल यू इफ़ यू डू रॉन्ग. मैं आपको कत्ल करूँगा अगर आप गलत करोगे. आई विल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू स्मोक अगेन. अगर आप दोबारा सिगरेट पियोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा. If you cheat again, I will tell the teacher.
अगर आप नकल करोगे मैं आपकी टीचर को कहूँगा। नेक्स्ट यूजेज को देख लें। पोलाइट रिक्वेस्ट, वेल जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली यू इज़ यूज्ड विथ वेल, तो इसको याद रखें कि यहाँ पे हम सिर्फ यू इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी प्रोनाउंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब दोगे मुझे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल यू टेल अली आई कॉल, क्या आप अली को कहोगे कि मैंने कॉल किया था। नेक्स्ट यूजेज को देख ले। ऑफर्स, विल जो है वो ऑफर्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूँगा। आई विल ड्राइव यू टू वर्क इफ़ यू वांट, मैं आपको काम तक छोड़ दूँगा अगर आप कहो। यू लुक टायर्ड, आई विल वॉश द डिशेस फॉर यू, आप थके हुए लगते हो, मैं आपके लिए बर्तन धोऊंगा। Now this is your quiz time. Choose the correct answer. So we have given you 3 choices A, B, C. You have to see which one is correct. Then pause the video and write your answers in the comment box. And if you have any difficulty, suggestion, please write in the comment box. Thanks for watching.